right, so our topic for today is Make in India, Make for Globe, enabling MSMEs to develop global competitiveness and to tap new market opportunities. And Ami's already introduced the panel, so I just want to begin and get right into it. I want to understand the challenges. Mr. Mahendra here, he represents the interests of traders. We have Rajiv, who represents, FICCI. We also have with us Mr. Paresh Mehta, who represents the Federation of Indian Export Organizations, Apurva Shah, who represents the Gujarat Chamber of Commerce and Industry. And आपसे शुरुआत करते हैं महेंद्र जी, ट्रेडर्स या स्मॉल बिजनेसेस की दृष्टि से अगर हम देखें तो किस तरह के चैलेंजेस सामने हमें दिखाई देते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बीइंग मतलब ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में, और किस तरह की कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उससे इकोसिस्टम में क्या परिवर्तन आया है? देखो, सही बात तो यही है कि ट्रेडर्स लोगों को जो कठिनाइयाँ हैं उनको आजकल राज्य सरकारों द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा कहीं भी सहूलियत देने की तैयारी हुई है। और आज हमें एक्सपोर्ट हर जगह पे बढ़ाना है, घर घर एक्सपोर्ट, हर एक्सपोर्ट की बात है। जैसे मोदी की बात चलती है, घर घर मोदी जैसी, ऐसे एक्सपोर्ट हमें SME के ज़्यादा में ज़्यादा करना पड़ेगा। जो इनके लिए हमें सबसे वजह है कि हमें काउंसिल के मेंबर होना चाहिए और हर जगह पे जहाँ जहाँ भी हो वहाँ पे टेलर मीट की मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज वसा जी ने कई चीज़ें बताई है, इस चीज़ों के अंदर जो हम शामिल होंगे। आज मैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का 16 साल से चेयरमैन हूँ। आई एम 85 ईयर्स ओल्ड। 16 साल से मैं चेयरमैन हूँ। मैं आसाम से लेके गौहती से लेके अरुणाचल तक मैं हर जगह पे घूमता हूँ और हमारी बातें हमेशा ट्रेडर्स के साथ रहती है कि ट्रेडर्स की कठिनाइयाँ हैं वो हमारी कठिनाई है। हम इस कठिनाइयों को हर एक सरकार के अंदर उनको सम्मिलित करते हैं और हर जगह पे ट्रेडर्स, एक्सपोर्ट वाले हो, इंपोर्ट वाले हो, हर एक चीज़ के लिए हम तैयार रहते हैं और हमें मदद मिलती है। मैं आता और विश्वास है कि हम आपके द्वारा ये ऐसे सेमिनार होते रहेंगे तो सरकार अच्छी तरह से जागेगी। और किस तरह की कठिनाइयाँ होती है कि ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं? देखो, ऐसा है कि आज लोकल मार्केट में हम लोग इकोनॉमी का प्रश्न होता है। इकोनॉमी का प्रश्न के अंदर हमें बैंकों के साथ भी अच्छा हो सकता है, लेकिन सरकार जितनी हमारे साथ रहेगी इतना हम बिजनेस बढ़ा सकेंगे, क्योंकि हम तो ट्रेडर्स हैं। तो आप कह रहे हैं सरकार साथ नहीं है? सरकार देती है हर जगह। आज गुजरात सरकार की बात करूँ तो गुजरात में बहुत जो भी कठिनाई थी उसमें कम करने के लिए बहुत अच्छी तरह मदद करने चालू की है। ऐसे महाराष्ट्र में भी है, हर जगह पे ऐसी बात हुई है। आज आप समझो कि जो उत्तर प्रदेश थी तो उत्तर प्रदेश में हमें सबसे ज़्यादा मदद मिलती है, ऐसे हम कहते थे, क्योंकि हमारे वहाँ पे लखनऊ में, कानपुर में, हर एक सिटी में जो हमारे ट्रेडर्स है तो अच्छी तरह से भी एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है। बिल्कुल। If I have to bring you in, Mr. Rajiv Gandhi, Gujarat is a significant contributor to exports. And what's the situation now? If you could explain to us, especially with the global headwinds and the situation that we have, if we had to boost exports into the state, what is the kind of blueprint that you think we need? Gujarat has always been in the forefront of any businesses in the country. So we have got a lead, but at the same time, small businesses need to have proper information for themselves to take them from level A to level B. Right. A micro at some time has to become small, has to become medium, and there has to be a plan for them to take it further. There is lot of facilities, there are a lot of facilities available by the government, central government, state government. But by definition, a small business is small. For them to access information on what can they really get so that their business is benefited, or sometimes how to meet the gap between
to manage the competition. I mean, Jaimin Bhai he mentioned that, he faced a lot of headwinds in trying to compete with China. Then he did a survey, he did a thesis, he got his doctorate on that. So all this needs to be done. In his case, he was determined to take it himself, and go against. But at same time, people are stressed in their doing business. They might not get so much time. Correct. There has to be information that is easily available to all of these people. And with that information available, how to use that information and take it further. Another thing, what I would like to say is removing the quantification on a qualitative note. SMEs sometimes, by the virtue and the fear that will they survive, will they not survive, they all the time thinking of whether they will be able to survive the competition, etc. They go on continuously drop prices. I would not say be competitive. They drop prices in their fear and desire to do business. Small businesses should learn to say no. It's not going to actually impact their survival. But if they learn to say no and they organize their business properly, and they will actually be able to do a little lesser business, but an extremely high quality business. So this is also one of the things which people should look into. Besides, of course, there has to be ease in getting information from the government side. All right, so remove the information asymmetry, and of course the other thing that you're saying in terms of strategy, make sure that your costs. Yes, I exceeded what your question was, but it was in my mind, so I just mentioned. Taking off from where Mr. Gandhi has left off, Mr. Vijay Mangukiya, you're the regional chairman for the Gems and Jewellery Export Promotion Council, and you're also a partner at Dhani Jewellers. Diamonds polished in Gujarat, they are sold all over the world. So, one would assume that we have global competitiveness. Yes. Right, in this. So, but now what more can be done? How do you take that next step further, if you have to boost, this sector even more? पहले तो डायमंड सेक्टर है ना, वो बैंकिंग के अंदर पहले रेड अलर्ट में था. तो SBI ने लोन देना चालू किया सबसे पहले, बाद में और बैंकिंग आई और लोन अवेलेबल हुई. तो ये प्रेशियस सेक्टर है और इसके अंदर हमें डिपेंडेंट रहता है माइनिंग, जो माइनर्स है उनके ऊपर. तो जैसे अभी फ़िलहाल बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, माइनिंग की तकलीफ़ें है, तो हमें रफ का सोर्सेज कम मिल रहा है, तो हमें थोड़ी एक्सपेंसिव भी बाई करनी पड़ रही है और माइनर्स से. मैटर एक रॉ मटेरियल की होती है, उसको गुड्स कंप्लीट करने की होती है, उसके बाद उसके सेल की होती है. तो GJEPC का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर. जितनी भी रफ इंपोर्ट्स होती है वो सारी GJEPC के अंडर में इंपोर्ट्स होती है. जो एक्सपोर्ट होते हैं उसके सारे फिगर्स, सारी मॉनिटरिंग बाय GJEPC होती है. तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ा जा रहा है, जैसे स्किल सबको चाहिए, तो हमारे यहाँ से IDI करके इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हमने डिज़ाइन किए जिसकी वजह से स्किल वर्कर्स डेवलप किए जाएँ. ज्वेलरी के अंदर काउंट किया जाए तो पुरानी प्रथा से जो बंगाली वर्कर्स थे वहाँ से ज्वेलरी बनती थी, तो आज आप देखोगे तो 40% रेशियो है वो यहाँ की लोकल पब्लिक है, उन्होंने कवर किया है, क्योंकि वो लोग खुद भी स्किल बेस्ड हुए. उसका एक ही रीज़न है कि हम यहाँ पे स्किल के जो कोर्सेज है वो चला रहे. उसके बाद जो लोगों को एक्सपोर्ट करना है, जब से मैं रीजनल चेयरमैन बना हमने शायद 10 से 12 बैचेस किए कि 500 to 550% है जो नए एक्सपोर्टर्स मार्केट में हम लेके आए, कि उनको एक्सपोर्ट सिखाया हमने. और लास्ट 2 साल के अंदर आप देखोगे तो मोर देन 150 कंपनीज सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आई है ज्वेलरी की, जो नए मैन्युफैक्चरर्स है, शायद वो आउटसाइड ऑफ इंडिया थे या बॉम्बे थे या कलकत्ता थे, वहाँ से मैन्युफैक्चरर यहाँ पे माइग्रेट हुए. तो स्किल डेवलप हो रही है, वर्कर्स मिल रहे हैं, अपना पोटेंशियल दिख रहा है सबको. तो हमारे नए स्टेप डे टू डे ये हो रहे हैं कि हमने लास्ट वर्ल्ड की सबसे पहली बायर सेलर मीट सूरत के अंदर डिज़ाइन की थी, और वहाँ पे 30 बायर्स आउट ऑफ इंडिया आए थे, और उसमें माइकल हिल जैसी ब्रांड्स भी थी.
तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट था। तो GJEPC हर एक स्टेप पे नए दौर पे नया काम करने चैलेंज लेना वो करती है और नए लोगों को स्किल देके उनको एक्सपोर्टर बनाने का प्रयास करती रहती है। राइट, आपने बहुत अच्छी बात बताई और एक प्ले बुक आपने बताया कि किस तरह से आपने कोर्सेज डेवलप करके नए एक्सपोर्टर्स तैयार किए हैं आपके क्षेत्र में। आई वांट टू ब्रिंग यू इन मिस्टर मेहता. Can this playbook, how do you see this playbook being replicated? For instance, they have managed to do it as far as, diamonds are concerned. Do you see potential in Gujarat, if you look at the ecosystem and, the export landscape that exists, which are the kind of sectors that you see, where similar playbooks could be implemented to greater success? This playbook can be accessed subject to the product-to-product categories. Right. Like what they did it only for the diamonds. Right. Same can be like in Gujarat, we have engineering. We have good engineering, Rajkot, Jamnagar. Then we have some pharmaceuticals in the Ahmedabad region. So if specific, because they have all the big industries also depend on the small, medium, large enterprises. Right. Those who are doing their job works or subcontracting kind of a things. So they can be aware of that policy. So from that playbook, they can, the policy, what are the requirements, what are the international standards, they can get the knowledge of that. So that could be one of the good idea of the GJPC to making that kind of playbook, which is sector specific, so can be done for the other sectors also. Okay. But in terms of the challenges, right, like for instance, global trade is driven by technology sectors, right, mostly like machinery, electronics, the automobile sector. The combined share of these three sectors is about 35% of global imports, which is worth around $7 trillion. And here our share, India's share, is less than 1%. So, how can MSMEs in textiles where Gujarat has strength? So, for instance, you mentioned engineering goods, but, say, for instance, textiles, pharmaceuticals, chemicals. How do you see, these being able to develop and enter into emerging markets? So, as of today, government, state government, central government, even the local, they are having good policies and very encouraging and supporting. But awareness of the policies are not there, going to the grassroots level. So we wanted, as MSME, micro industry, he might be having 10 workers or 20 workers. Or the owner or the family, they are working on the floor Right. of the company. So they are not spending much, won't be able to spend more time for the awareness of the new policies, new market uptrends, what are the different, say, new technologies. So that should be awareness coming back to them through that one kind of playbook, books or something, or some government policies, or some calling them, or in the district level, city level, or the area level, where the industry clusters are there. Right. And make some seminars or some their involvement into the new policy, and make them aware that these are the facilities available from the government and from the organizations like FICCI, FIEO, and other organizations. Right. What is FIEO doing specifically in the Western region to, enable this sort of knowledge sharing? For the Western region, just I'm giving the broad awareness of the FIEO that we have almost 250 events every year, all over India, which is including buyer seller meet overseas and reverse buyer seller. That is, we invite the foreign customers to India and making them matchmaking between the product as per the product requirements. So last week, if you see the last 3 or 4 Gujarat Vibrant, FIEO was the partners in the reverse buyer seller meet. Same we did this year with Indore. It was Global Investor Summit, where FIEO I brought almost 70 overseas customers. Right. But that is for them organized by the MP government, which is still under Western region. And over that matchmaking was like 70 overseas compared to 300 local MP vendors, micro MSMEs have participated, and then we made the matchmaking. Right. So it was discussion of almost like 800 to 1,000 crore rupees of worth of trade. We don't know exact figures later on, but that was the trade was under discussion. All right, so obviously all of that, you're trying to get over the information asymmetry by at least providing this sort of information. Apurva Shah, I want to bring you in at this point. Now you've heard all of them speak. You represent the Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Let's spread the umbrella a little and talk of it from an India perspective.
when you look at India and the state of MSMEs in the country, how do you see, or how would you map or rate their potential to develop global competitiveness? Especially when we have, global, giants are looking at a China plus one policy, especially in manufacturing. But when we look at global competitiveness, how do you rate our ability to be globally competitive? The major advantage, I think, the Gujarat exporters in particular, I would say. We've got 2-3 ports very close. The major cost would be logistics. Right. So most of the Gujarat companies are benefiting from the logistics sides. The small disadvantages, I would say, for the small, where we as Gujarat Chamber represent, and I'm a medium company as well, so we export, is when you go for finance with the banks to get the knowledge for discounting, or different countries, you get different orders. The support system should improve. We have a help desk at Chamber, with SBI in fact. We have a full-time help desk at our premises, where we guide our members, we coordinate with the other chambers in different nations. We keep engaging with different chambers worldwide. Every week we have someone or the other. Last week we had Estonia, and they are meaningful. So what we do is we call a sector Pacific. Right. So if there is a pharma delegation, we connect the pharma guys, the textile, we connect the textile. As Rajiv mentioned, I would rightly quote, every company needs to step up and up. That is where the chambers come and play a role. Handhold them, give them the right guidance at the right time, keep updating the right policies, keep interacting with the government to engage the right policies or spread it to all the members. Right. Even though we send a lot of emails, I believe so quite a few do not even bother to open or see them. So it is vice versa both ways. When you send someone, they have to be proactive. And we, at the moment as we are speaking, we're doing a digital course of learning in Chamber. A very nominal cost of say 5,000. It is not the cost. So we keep engaging their companies who are still not on the digital platform. And we being the largest regional chamber, we have around 260 associations, 250,000 members, 12 regional chambers, and 7,500 voting members. So we keep engaging with the small businesses. So for exports, I think it is both. The companies will all have to put their hands on, Right. and not expect everything for the government to help you at all times. At the same time, the ease of business at the ports has improved, but it still needs to improve. From the perspective, if you are exporting to Vietnam, a container is out in 24 hours. It doesn't happen in India, it takes 3 days. Right. So we are improving. I'm not saying we're improving, but there's still an edge where we need to go up. Yeah, a road to go. But from what all of you are saying, the one thing that I'm hearing, and I'm hearing that again and again, is that there needs to be that motivation that needs to come from individuals. So my question is this: how are you going to incentivize, or how have you thought of incentivizing, good positive behavior, and do you think that could trigger, better opportunities, or trigger entrepreneurs to be more proactive when it comes to undertaking export or expanding their potential? I think when you have the urge to do business, you automatically take on things. And it is natural that once the academia is done, the transition to business is where you have to put yourself in the right places, go to the right chambers, to the right forums. So why is that not happening? I mean, all of you have put in the effort. You are saying that, there are people on the ground, you yourself, your organizations, Mr. He said that, as far as the gems and jewelry space is concerned, at least there seems to be some kind of a transition. I think there is a transition, but at the moment it is worldwide slow. It's not just the exports of India that have gone slow. Right. But at the same time, I think the government is pushing for a lot of FTAs, Right. which is quite good at the moment because that is the need of the hour. Right. For example, sector specific, like garments. Why is Gujarat not doing as good as Bangladesh? Very simple. They have 9.2% duty edge against India. Right. So that is where the government role comes into play. You cannot have an efficiency of 10% in a voluminous industry. So the competitiveness changes when the policies between a nation and nation change. So I would not blame the garment industry here, but then the other nations have other opportunities of 10 to 12%,
which is So they have not leveraged- possible. They have leveraged their And opportunity. we're doing the FTA. So we've done an FTA with Australia last year, which is helping our industries here from pharma or textile. So I think leaving the WTO and engaging the FTAs, which the government is doing, is quite a good thing for the nation and the industry. Alright. महेंद्र जी, आपसे एक सवाल है, हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस किस तरह से उनको लेवरेज कर सकते हैं? How can Gujarat MSMEs utilize collaborations to सही improve बात तो यही है market reach? कि जो भी ट्रेडर्स है, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, उसको बाहर सेलर्स मीट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर मिलते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस मिलेंगे। और जो एक्सपोर्ट काउंसिल है, जो एक्सपोर्ट काउंसिल बहुत मदद करती है। आज 40 प्रकार की भारत सरकार में एक्सपोर्ट काउंसिल है। इस एक्सपोर्ट काउंसिल का तो मेंबर होना चाहिए। अगर मेंबर होंगे तो आपको हर जगह की माहिती मिलती रहेगी। जो माहिती मिलेगी तो आपको बिजनेस कहाँ बढ़ाना है, किस जगह पे आपका जो माल है बिकने वाला है, तो आप जान सकेंगे। अगर इसे जान सकेंगे तो आपका बिजनेस हर जगह पे एक्सपोर्ट में अच्छी तरह से काम बढ़ सकेगा। All right. Want to bring you in, sir. What are the growth prospects? Because you're part of the biosciences space. What are the growth prospects that you envisage for Gujarat MSMEs in the pharmaceutical and biotech sectors? And how do you think they can enter emerging markets? What are the strategies and insights that have been employed by Hester Biosciences Limited to navigate these global markets? If you could give us some of your insights on that. Yeah. Today, India, in terms of biotechnology, specifically, we make vaccines. So my knowledge is more on vaccines and pharmaceuticals. Today, India is one of the leading providers of vaccines, of pharmaceuticals, health products. So, in order to become competitive in the world market for any small, medium enterprise, the best thing is to get in touch with the Indian producers, the big producers of pharmaceuticals, the big producers of vaccines, biotechnology products, because as India has a big market worldwide, if they align themselves with these manufacturers first over here, automatically their alignment and their ability to sell in the world market would go up, because today we are anyway competitive. Today, if you look at Serum Institute, some of their vaccines, nearly 1/3 or half the world population is using their vaccines, or maybe 2/3 of the world population for their MMR, some vaccines. So we should first tap these companies in itself over here, and if we are able to successfully do business with them, automatically we will be able to do business worldwide. As far as we are concerned, we make animal vaccines, as I mentioned. There are many products that we take from small industries who produce for us, for example, bottles, some media preparations, certain other items, etc. What we do is we work with all these small and medium manufacturers. We talk to them, we build a repo, we exchange quality parameters, that what we want, what is in the world, and we also sit with them and try to talk to them on the pricing front, because a small and a medium enterprise needs to be, their hands need to be held by the big companies, and they need to be assured of a pricing. So if these people are assured of a pricing, they will put in more money in their own R&D, in their own zeal to do more business, and that will make these people grow. So we as an industry, we as a company, and I think overall this has to be one objective of the big companies, to handhold them, talk on quality, assure them prices. Then you can tell them that after 1 year, 2 year, 3 year, we will decrease the prices. So then you can become more, you look at other
opportunities to sell. But this thing needs to be done by the big companies. So basically mentorship. Yes, absolutely. I could not get the word, but you just told the word, mentorship. Absolutely. Okay. जो जिस प्रकार से अभी देश का माहौल चल रहा है अपने बिजनेसमैनों को कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप बिजनेस करने जाओगे तो इंटरनेशनल बिजनेस आपको ज़्यादा में ज़्यादा मिलेगा। आज आप समझो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर $100, 100 पाउंड, 100 मार्क, यहाँ पे तो 2000, 1000, 5000, 10,000 का था। आज समझ लो कि 2000 की नोट गई है, अभी 2 साल ज़्यादा नहीं होगा, 500 की नोट भी जाने वाली है, समझ लेना। क्योंकि हम आज पूरे वर्ल्ड के अंदर डिजिटल के लिए हम अव्वल हैं, हमारा सबसे ज़्यादा डिजिटल बिजनेस है। डिजिटल बिजनेस करने से हमें विदेश में सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। तो आप इसी तरह से करेंगे तो पूरा बिजनेस आपका बढ़ने वाला है, उसमें मैं कोई भी जात की मैं दरकार नहीं करता हूँ। All right. But you know, on the same note, Mahendra ji just spoke, Mr. Gandhi, I want to ask you, you know, how have you employed innovation? How have you employed, as a company, technology to expand exports? And, you know, how do you see the ability of businesses in Gujarat to be able to, I mean, is there a technology stumbling block that you see? You know, give us a sense from your vantage point. Adaptation of technology is definitely an area where companies need to put in a lot of focus, because sometimes one buys technology and one is not able to adapt the technology. So that is an area which definitely one needs to put a little bit of a focus on. Today, technologies are available worldwide. If you go deep, you know, you do a little bit of search on the internet, etc. And even why internationally. Today, talking about, again, vaccines and the animal vaccines that we produce, we have bought quite a few technologies from the government of India, from the Indian Veterinary Research Institute. To just share with you, any new technology that has come up in the next 10 years in veterinary vaccines, we have bought these technologies, and then one needs to keep these technologies, and at some point of time the use is always going to come, and you would be able to reap the benefits of those technologies and take it further. So keep an eye open and even do a little bit of study within India. There are enough people with talent, enough companies, enough institute who will be able to give technology and take the technology, and of course international technologies are there, but within India, strive hard, take technologies, adapt them, keep them. At some point of time, they will be used and you will be able to reap those technologies. You know, to that point, Vijay bhai, you know, if you can come in, you know, he mentioned platforms, right? E-commerce platforms. So I want to understand from you, digital transformation has become, you know, such an important key thing when it comes to businesses. And, you know, also in the gems and jewelry space, how do you see Gujarat's gem and jewelry MSMEs being able to leverage these e-commerce platforms and, you know, reach wider global audiences? जेम्स एंड ज्वेलरी जो सेक्टर है उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रोडक्ट बेचना पहले बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करते थे। गोल्ड है, डायमंड है, तो जैसे नई कंपनियां स्टार्टअप में पहले आई थी, ब्लू स्टोन आई, वैसे सारी जो कंपनी आई तो लोगों को बिलीव होने लगा कि जो चीज़ दिख रही है वही आ रही है। ये सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ आपको कि इसके अंदर ये बिक रहा है, पर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखोगे तो यूएसए ले लो, यूके ले लो, या यूरोप की कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी चीज़ पकड़ लो, ऑनलाइन ज्वेलरी पहले से सेल होती आ रही है और लोग बिलीव कर रहे हैं। कोरोना के टाइम की बात की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज मैं सूरत का एक एग्जांपल लूँ कि छोटे से छोटा कोई भी ब्रोकर है ना, वो भी आज यूएसए सेल कर रहा है। उसका रीज़न क्या है कि सोशल मीडिया इतना अपडेट हुआ, लोग फ्री बैठे थे तो लोगों ने सीख भी लिया कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाए और ट्रांजैक्शन कैसे किया जाए, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, एक्सपोर्ट कैसे किया जाए।
ज्वेलरी गोल्ड सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, कस्टम के थ्रू ही एक कस्टम का पार्ट आता है, उसके थ्रू ही वो एक्सपोर्ट होता है। तो कोई भी चीज़ है, अगर वो $50 की या $100 की या $50,000 की या $1 लाख की है, उसका एक्सपोर्ट एक्सपेंस 25,000 से 40,000 रुपीज़ लगता है। तो ऑनलाइन सेक्टर के लिए वो चैलेंजिंग था। हमारे ओर से एक प्रयत्न हुआ कि हमने इंडिया पोस्ट को एक्टिव किया है इसके अंदर। इंडिया पोस्ट को इंडिया पोस्ट ने इनिशिएटिव लिया, ये प्रीशियस चीज़ों को विथ इंश्योरेंस एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने हेल्प किया। तो आज उसका एक SOP सेट हुआ। हमने बहुत सारे सेमिनार्स किए पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, सबको इंडिया पोस्ट का नॉलेज दिया। आज बहुत सारी कंपनियां इंडिया पोस्ट के द्वारा ऑनलाइन सेल कर रही है। ये हमारा एक बड़ा अचीवमेंट था। दूसरा ये था कि इंडिया पोस्ट अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो 15 डेज से 28 डेज तक का टाइम लगता है डिलीवरी होने के अंदर। तो हमने एक शिपमैक्स करके एक प्राइवेट कंपनी है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो कंपनी है 2200 रुपीज़ के अंदर 5 लाख रुपीज़ तक की कोई भी प्रोडक्ट है वो 8 डेज में US से डिलीवर कर देती है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एकदम प्रेशर मतलब इतना फास्ट एक्सप्रेशन मिला और सब लोग ने उसके अंदर भी इतना काम स्टार्ट कर दिया। आज लास्ट अगले मंथ के पहले ही हमने इस अहमदाबाद में भी सेमिनार किया था सारे ज्वेलर्स को लेके कि आप ऑनलाइन सेल कैसे कर सकते हो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म हमने GJEPC के द्वारा उनको पूरे किए हैं। और इसके अंदर एक चीज़ ये है कि गवर्नमेंट की ओर से हमने और भी बेनिफिट्स मांगे थे कि इसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक की फैसिलिटी ओपन की जाए। वैसे और जो बड़े अपने एक्सपोर्ट होते कस्टम के हाउस से, वहाँ पे तो ड्यूटी ड्रॉबैक है ही। उसके अलावा हमें एक्सपोर्ट गोल्ड की जो डिमांड थी, गुजरात के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर 2 या 3 नॉमिनेटेड एजेंसी थी जो गोल्ड प्रोवाइड कर रही थी, ड्यूटी फ्री गोल्ड। तो आज हमने गुजरात के अंदर DIL करके डायमंड इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद यस बैंक को भी इंट्रोड्यूस किया, SBI को भी इंट्रोड्यूस किया। ये सारे कॉम्पिटिटर हुए और सारे लोग अभी एक्सपोर्ट गोल्ड प्रोवाइड करने लगे, जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबल मार्केट को कंपटीशन दे सकें। आप समझोगे कि हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो हमें 12 to 15% ड्यूटी और एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते। तो अगर यही चीज़ मैं USA में सेल करूंगा तो वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे ड्यूटी फ्री गोल्ड की रिक्वायरमेंट थी। तो लास्ट 2 साल के अंदर हमने इनिशिएटिव लेके इसको भी एक्टिव कर दिया। तो हम ग्लोबली कंपटीशन दे पाए, सर्विसेज दे पाए और उनके वजह से हमारा बिजनेस बढ़े, यही प्रयत्न हमारा रहता है। तो E-कॉमर्स है हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हुआ। आज B2C नहीं, B2B के लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। आज बहुत बड़ी बड़ी डील्स है वो ऑनलाइन हो रही है और आगे बहुत सारा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, वैसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कितना प्रतिशत बिजनेस जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी का है, एक अंदाजा दे सकते हैं कितना ऑनलाइन बिजनेस इससे हो रहा है? फिलहाल दोनों ओर से आप देखोगे तो जो रफ इंपोर्ट होती है उसका सिर्फ आपको नॉलेज दे दूं कि रफ इंपोर्ट होती है तो वो डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होती है। हमने GJEPC ने एक स्पेशल नोटिफाइड जोन एरिया बनाया हुआ है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ है। तो ये सारे जो बिग प्लेयर्स है और जो भी MSME सेक्टर के अंदर आते हैं वो लोग अपना रफ का व्यूइंग किया जाता है। रफ ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने ऑनलाइन चेक किया और आप परचेज कर सको, उसको मैन्युअली हाथ से देखना पड़ता है। तो वो स्पेशल नोटिफाइड जोन का एरिया हमने डिज़ाइन किया है, बॉम्बे के अंदर भी किया है, सूरत के अंदर भी है। तो ये सारे लोग आते हैं, उसको व्यूइंग करते हैं और वो सारी चीज़ें वापस चली जाती है। वो बेल्जियम से आई है या दुबई से आई है या कहीं से भी आई है और यहाँ से फिर उसकी बिडिंग होती है, तो फिर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया। तो जो जितनी भी रफ इंपोर्ट होती है एग्जैक्टली उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इंपोर्ट किया जाता है, वैसा ही बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि अपने गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो भी चीज़ आएगी उसको लेवी 2% चार्ज किया जाएगा। तो हमारी रफ के अंदर वो 2% ऑलरेडी लगाया जा रहा है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि वो लेवी हटाई जाए, जिसकी वजह से और भी लोग इसके अंदर जुड़ पाए। और एक्सपोर्ट के मामले में हम देखें तो कई कंपनियां ऐसी है कि जिसके पास US का वीज़ा नहीं है और वो कभी US गए नहीं है, तो आज वो लोग अच्छे खासे एक्सपोर्टर्स है। तो मैंने देखा वैसे रेशियो 15 to 20% इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 साल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दौर से। बाकी सबके पास जो ये प्रेशियस चीज़ है तो सबको देख के ही लेनी होती है, पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें 15 से 20% का इंक्रीज मिला है एक्सपोर्ट के अंदर।
No, there's great success stories there. So, can you share some of the success stories, that you might have had, as a representative of FIEO in the Western region, where MSMEs have benefited from FIEO's export-related training and, would have achieved significant growth? Definitely. We regularly on the Western region I'm talking about right now, that we have capacity building programs supported by the Commerce Ministry. So we do almost like a 5 to 6 programs every month in the different cities of small to second, 2 tier, 3 tier cities. And plus we do buyer-seller meets. We take the delegations from India for the exhibitions or for the buyer-seller with the support and organized by the arrangement by the Indian embassies. Like I was the group leader when I took the delegation to Kuwait in last Kuwait in October. And after the same, at the time we were having 17 to 18 delegates. Most of them are startups or maybe just they started in last 3 years. Right. So at the time, the same delegates has taken another participation in another delegation to Botswana and the South Africa. Right. So what I heard from the same participant, that they started some export orders, already negotiated the orders, and they started finalized the orders, and they got some business. So that way, we are doing lots of business delegations, going to the overseas or bringing the customers. Like I said, Global Investor Meet, we brought 70 customers from overseas, spread from Africa, Latin America, European, and the Far East. Right. So many congratulations, and Thank you. we hope that that continues for you. This is now my last question to you, and we'll wrap this discussion there. From the viewpoint of the Gujarat Chamber of Commerce and Industry, talk to us about how Make in India and Make for Global initiative has helped the MSMEs in Gujarat, and also for them to be able to develop products and services which are meeting international standards and are leading to growth opportunities. So when you say Make in India, the last 1 year, if you see the small and the micro, particularly because Chamber engages a lot with the medium and small, most of them have upgraded their machinery because of the different schemes provided by the government of India and the state of Gujarat. So, for example, I would be processing in a small unit, say 200 units. I've upgraded it with the better quality because the incentives over for capital as well as interest subsidy. So we are in par with the world standards. We are around 6 to 8% interest. They're getting 4% back from the government of India. So it was only quality which had to be improved. So government had kept engaging a lot of courses. They kept doing a lot of skill development, which we did it at Chamber as well. They started doing that in industrial area, which is where they should be. For example, Vatwa or Naroda, say in Ahmedabad. So they keep doing those courses where they come and train the workers. They give subsidies to workers. So the skilled labor is going higher up notch every year on and on. And it is not sector specific, it could be different sectors. Right. And it has been choosing a lot of different sectors. Luckily, the windows keeps opening, and we hope that they keep engaging with bodies like us where they take the know-how before launching the policies, which is the need of hour. Sometimes it happens the policy comes up and they've not consulted with the engaging industry. Right. So, for example, if pharma, we would rather have someone on board from the pharma or a textile guy who knows the day-to-day problems. Okay. But they've roped in a lot of people from different organizations where they take the initiative of understanding the industry problems and then launching the policy. All right. But on that point, I just want all of you to, make some quick comments. When you look at policy, especially within your sectors, within your industry, is there one or two things that you'd like to change? What would be that wish list? For the growth of the MSME, jumping from one level to another level, like most of if you see the data, as my other speakers have said, that more than 60 million MSME units are there. So out of that data, if you see that more than almost 550 to 570 millions are tiny industries, micro industries, which are like 1% to 20% or 40 people are working in mainly homegrown, home managed, or single person is managing from raw material to orders to everything and operations and
shipping. So for them, the next level is awareness, first thing. Skill training, we need it from the government support at district level, At the district level, right? right? Cheap funding, because without, even though government has the policies, like as Mr. Rajesh has Bharat, said, yeah. Bharat has said, but that awareness is not going to the ground level. And if they need to grow up, changing from one grade to micro to small, they need some extra land expansions. So they need some, in the cluster if they can get cheap land at a long lease and at a cheaper rates. All right. That could be one of the, Wish lists. and the technical know-how. And the technical know-how. But, hopefully that as FIEO you're providing. But Mr. Mangukiya, what would be the wish list, if policy-wise, is there a change that you want? I think you mentioned one or two. Yeah, policy wise मैं मेरी इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ, तो उसके अंदर जैसे ही गोल्ड इंपोर्ट होता है उसके अंदर 12.5 से लेके बहुत और भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस मिल के हमें 15% यहाँ पे महंगा पड़ रहा है. हमने हर बार रिक्वेस्ट की, नए बजट के अंदर भी रिक्वेस्ट की थी कि उसको घटा के 5% किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो MSME सेक्टर है उसको इजीली उसको टर्न ओवर कर पाए. ऐसे बहुत सारे हमने रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को दी हुई है कि ये चीज़ें चेंजेस की जाए, ये चीज़ें, पर गवर्नमेंट का रवैया इसके अंदर बहुत पॉजिटिव है. इसका मैं 2-3 एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि उन्होंने R&D के लिए जो नई इंडस्ट्री आ रही है, लैब ग्रोन इंडस्ट्री, उसकी R&D के लिए अगर 250 करोड़ दिए है तो उसका कुछ अचीवमेंट में दिख रहा है कि उसके अंदर से और नई क्रांति आएगी. अब मेक इन इंडिया की एक बात करें तो पहले हमें रफ रॉ मटेरियल के ऊपर, बाहर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था. तो ये जो लैब ग्रोन डायमंड है वो अपने यहाँ ही ग्रो होते हैं. तो अभी डायमंड की रफ भी इंडिया में बनने लगी, पॉलिश भी यहाँ पे ही हो रहा है, ज्वेलरी भी हम ही बना रहे हैं और सिर्फ बेच ही रहे हैं. तो ये एक नई इकोनॉमी शो हो रही है और बाहर से पैसे आने वाली बात है. पहले क्या हो रहा था कि रफ की पेमेंट जाती थी और हमें पॉलिश की डायमंड आते, तो बीच में लेबर जॉब हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया. अब सारी चीज़ें अपनी है और हमें सिर्फ पेमेंट आनी है. तो पॉलिसीज़ के अंदर थोड़े टफ डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के कि वो चीज़ चाइना भी कर रही है और इंडिया भी कर रही है. तो चाइना से जो चीज़ वो मटेरियल आ रहा है ना उसके ऊपर ड्यूटी लग रही है. तो हमने उसको रिक्वेस्ट की कि उसकी ड्यूटी हटाई जाए. मतलब एक माँ के 2 बेटे हैं ना, तो एक के साथ अन्याय हो रहा है. तो उसको मतलब पॉलिसीज़ को समझने में गवर्नमेंट को ऐसे ही समझाना पड़ता है कि आप रियली ये फैक्ट है और ये नहीं है. और गवर्नमेंट अभी एग्रेसिवली, आप देखोगे सेपा देखोगे, एक्टा देखोगे, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने करार किए, जो दुबई के साथ करार किए है, आज वेल डेवलप्ड कंट्री हमारे साथ करार मतलब MOU कर रही है, तो कुछ तो है अपने पास, तो हम उसका बेनिफिट लेते हैं, उसके सेमिनार्स करते हैं. पॉलिसीज़ के अंदर अगर कोई चेंजेस करने हैं तो DMCC को बोलते कि इसके अंदर चेंजेस किए जाए. जो दुबई के बहुत सारे रूल्स थे, पार्टनरशिप ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, उसको हमने चेंज करवाया है. तो आज है धीरे-धीरे चेंजेस. यस, ये समझ जाते हैं ना, तुरंत हो जाता है. समझाना मुश्किल है. समझाना मुश्किल. यस, और यही काम होता है. कोई भी काउंसिल है या कोई भी संस्था है, उसके जो भी लोग, जो भी कमेटी है, वो वही काम करती है. और हमने ये सारे प्रस्ताव, एक मीटिंग तो हमारी ऐसी हुई थी कि मोदी जी भी सामने बैठे थे और हमें सुना था. तो ये सारी संस्थाएं वही काम करती है. और पॉलिसीज़ की बात करें तो हम ही बनाते हैं और हमारे लिए बनती है. तो गवर्नमेंट एग्रेसिव है. आज ऐसा स्टेज आ चुका है कि जो बहुत बड़ी पोस्ट है कि डेवलपमेंट कमिश्नर है, वो हमारी संस्थाओं को विजिट करते हैं और हमें पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. पहले क्या था, हम बार बार उनके पास जाते थे, सॉल्यूशन नहीं होता था. तो दोनों ओर से अभी एग्रेसिवली काम हो रहा है, तो रिजल्ट आएगा मेरे हिसाब से. चलो, अच्छी बात है. टू यू. Yeah, I mean, all that I would have to say is that whenever a company is registered, they must have access to the state policy and the central policy, and it is up to each individual in that company who has access to that, read everything and then take it further. Trying to look at changes in policy comes later on. First, at least one should understand what the policy is, and then we can talk about changes. Right. So at least attempt to understand. Yes, absolutely. चलिए महेंद्र जी, अभी आपके पास माइक. मैं तो लास्ट आप पूरा समाप्त करें. मैं तो बहुत सीधा समझता हूँ कि जिसको व्यापार करना है उसको समझना तो पड़ेगा.
व्यापार करना है तो मुझे कहाँ पे व्यापार करना है, मेरा रॉ मटेरियल कैसा है, मेरा मैन्युफैक्चर कैसा होगा और मैं कहाँ निकास कर सकूँगा। निकास करने के लिए आज हमारे पास बहुत पॉलिसी है, बहुत जगह पे हर एक कंट्री के लिए हमारे लिए तैयार है। आज भारत सरकार आज एसएमई तो रीढ़ की हड्डी के मुजब है। आज पूरा जो बिजनेस फीचर जो है तो एसएमई से तो भारत सरकार का सबसे ज़्यादा चलता है। मैन्युफैक्चर बड़े बड़े हैं वो तो करते रहेंगे, लेकिन आज जितने भी एक्सपोर्टर बढ़ते जा रहे हैं इसका देश की इकोनॉमी को अच्छा तरह से मौका मिलता जाएगा। हम आपको सबको एक ही समझना है कि हमारी पॉलिसी क्या है, हम किसी तरह से बिजनेस करना चाहते हैं। हमें ज़्यादा करना है, हमें कम तो करना नहीं। हम बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं तो हमें समझना पड़ेगा हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ पैसा मिलेगा। एक तो गुजराती लोग तो पहली बात करेंगे पैसा कहाँ मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हमारा रॉ मटेरियल ये सब चीज़ हमें देखेंगे तो अच्छी तरह से हम तैयार करेंगे। हम स्थानिकों के साथ समझना पड़ेगा, जो एजेंट लोग रहते हैं जो एक्सपोर्ट करके लिए उनके साथ समझना पड़ेगा, और हर एक कंट्री के अंदर की पॉलिसी के साथ करके हमारी सरकारों के साथ। आज समझो कि आप गुजरात में हैं तो गुजरात सरकार के पास इंडस्ट्री मिनिस्टर में जाओ तो पहले बोलेंगे एसएमई वाली को हम पहले बिजनेस देंगे, हम पहले काम करेंगे। आज पूरा डिपार्टमेंट करके रखा है हमारे गुजरात सरकार ने, तो आज इसी तरह से हर एक स्टेट के अंदर किया है। तो आप जाइए, बिजनेस बढ़ाइए। जो एक्सपोर्ट हमें घर घर एक्सपोर्ट करना है, हर जगह पे एक्सपोर्ट करना है, और इसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा, जागरूक रह के काम करना पड़ेगा। All right. You know, he's really championed and wonderful, sir. They're all very enthused. You know, you are an inspiration to all of them. मैं एक बताऊं, मैं 2 दिन के पहले हॉस्पिटल से जायडर से वापस आया हूँ। थोड़ा एक गला का ऑपरेशन था, फिर भी मैंने 27 तारीख का अपॉइंटमेंट। आज मेरा नितिन गडकरी का बर्थडे है, नागपुर मेरी बहुत बड़ी पार्टी है, वहाँ मुझे जाना इन्विटेशन है, तो भी मैं कैंसिल किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने 20 दिन से मैंने प्रॉमिस दिया था। तो आज मेरी मिसेज बोलती है कि अभी हॉस्पिटल आते हो, कहीं गए नहीं हो, तो आज हम जाएंगे। मैं भी घर आके खाऊंगा, चिंता मत कर, मैं अच्छी तरह से रहूँगा। आज सबको मिलने का मौका मिले तो ऐसा अच्छा कहाँ चीज़ मिलेगा। थैंक यू सर, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए और इतनी सारी बातें बताई। यू नो, थैंक यू सो वेरी मच to each and every one of you for giving us insights, for helping us आप लोगों ने understand. हमें सहन किया है, उसके लिए आपका आभार। And thank you to a wonderful audience. Thank you so much. Thank you.